alaikum, dear student of class 7. Dear student of class 7. I hope that you are all very well and welcome to my period. So today's our topic is preposition. Our topic is preposition. We have already learned preposition, but I will tell you again what is preposition and different usage of prepositions. So first, I think is everybody ready to start? Yes, okay. So open the page number 14. Language structure, prepositions. Language structure, prepositions. Now I will read this passage. Some of the smallest words in English are the most important. Some of the smallest words in English are the most important. We use words like in, on, from, to, by, at, with, under and many more. Right, beta? Over and over again. Make sentences. They are called prepositions. Right. Sometimes it is easy to see which one to use. Sometimes it is easy to see which one to use. We can all see the difference between in the box and on the box. In the box and on the box. But beta, first of all, what is preposition? What is preposition? First beta, in preposition, pre means first or before. Pre means first or before. Position means state, halat, condition. So beta, do you know what is preposition? Preposition is a word that indicates the position. Preposition is a word that indicates the position or relation of a noun or pronoun. Indicates the position or a relation between noun or pronoun, or a relation between noun or pronoun. Relation of noun or okay beta. Now preposition is a word that indicates the position or a relation of noun or pronoun with another noun or pronoun. With another noun or a pronoun or verb in the sentences, or verb object in the sentences. Right beta? Or verb. Now beta, preposition is a word which indicates the position or a relation of noun or pronoun. In other words, are noun or pronoun or verb
सेंटेंसेस, राइट बेटा। ग्रामर में प्रेपोजिशन असां सिंधी में असां चवंदा हरफ जर। हरफ जर उहो लफ़्ज़ आहे जेको इंडिकेट करे थो, ज़ाहिर करे ॾेखारे थो छा पोज़ीशन खे, ऐं तालुक़ु रिश्तो ॾेखारे थो इस्म या ज़मीर जो कंहिंसां, ऐं ॿियनि नाउन जे प्रोनाउन जे वर्ब सेंटेंस में जेको हुजे उन सां गॾु। या प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप इन अदर वर्ड्स। ओके बेटा, preposition is a word which used before noun or pronoun to show its relationship in other words, right? Example beta, I am in the class। इन असांजी प्रेपोजिशन आहे। आई छा आहे पुट, द क्लास असांजो छा आहे, नाउन थी वियो या ऑब्जेक्ट बि थी वियो पुट सेंटेंस में। नाउ अदर एग्जाम्पल, sun। Now beta, the planets revolve around the sun। The planets revolve around the sun। planet सयारा पुट ग्रह सिज जे चौधारी चक्कर हणनि था। अराउंड असांजो छा आहे, प्रेपोजिशन। प्लेनेट पुट नाउन थी वियो, सन भी पुट नाउन थी वियो या ऑब्जेक्ट थी वियो। ओके, preposition is a word which is used before noun or pronoun to show its relationship in other words। some prepositions beta, some prepositions more than one word, some prepositions have more than one word, they are called a compound preposition। some prepositions have more than one word, some preposition some prepositions have more than they are called okay। now some prepositions have more than one word, they are called compound prepositions, they are called compound prepositions। example, I hung the mirror, example, I hung the mirror in front of the door। example, I will tell orally। I hung the mirror in front of the door, and the towel rod next to it। in front of compound preposition and next to compound preposition। in front
of the door, in front of the door, and the towel rod next to it. Okay beta, so now look at the board. So some prepositions have more than one word, they are called compound preposition. एक होने पुत्र simple prepositions, ॿियो आहे compound preposition. Simple prepositions in, on, at, behind, after, before, पुत्र ये शइ असांजो simple preposition. ॿियो थो चवे some prepositions have more than one word. कुछ prepositions, कुछ हरफ जरा अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके हिक खां वधीक हूंदा, असां उनखे छा चवंदा आहियूं, compound preposition चवंदा आहियूं. छा चवंदा आहियूं, compound preposition. जीअं for example बेटा, look at, I hung the mirror in front of the door and the towel rod next to it. Right पुत्र, in front of, ये छा आहिनि असांजा compound prepositions आहिनि. छा आहिनि पुत्र, compound, and next to, ये आप शइ असांजी compound preposition आहे. छा आहे पुत्र, compound preposition. So बेटा, I hung the mirror in front of the door and the towel rod next to it. Simple preposition, only one preposition, only one word, only one word, and compound preposition more than one word. Okay beta, preposition, so baba, preposition is a word that indicates the position or relation of noun or pronoun with another noun or pronoun or verb in the sentences. Okay, I am in the class. मुंहिंजो ऐं क्लास जो तालुक़ असांखे कंहिं ॿुधायो, इन ॿुधायो, त इन असांजी छा आहे, preposition आहे. जीअं अदर एग्जाम्पल, द planets revolve around the sun. सयारा गिरह सिज जे चौधारी गर्दिश कनि था पुट, चक्कर लॻाइनि था. द planets noun आहे पुट. ओके, revolve छा थियो पुट, असांजो verb थी वियो. around the sun, अराउंड असांजी छा थी वई, preposition थी वई. अराउंड असांजी छा थी वई, preposition थी वई. compound preposition पुट, preposition indicate, preposition पुट, preposition is a word which is used before noun or pronoun to show its relation in other words. Okay, so beta, now okay, preposition of time, preposition of place, and the preposition of direction. Okay, preposition of time means कहिड़ो कम कहिड़े टाइम ते कहिड़े वक्त ते थिए थो. where someone or something is, where बेटा, where someone, place where someone or something is. प्लेस में पुत्र टाइम जो मतलब छा आहे, वक्त, मीन्स where someone or
something is. Okay, where someone or something is. Where putra, where someone or something is. Time badana putra, where someone or something is. Sorry beta, time, place, where, place, when. Okay, so place, where, time beta, when an event happens. Sorry baba, इतने खनी क्यों place and time. Where someone or something is means, example, example beta, Ahmed is standing against the wall. Against a wall पुत्र. हाणे against असांजी छा थी वई? preposition. against असांजी छा थी वई पुत्र? preposition. means छा थो ॾेखारे? against wall. wall जे पोयां. ठीक है पुत्र. उन खां पोइ आहे टाइम. happens or happened. Okay baba, when an event happens or happened. When an event happens or example, Ahmed swims on Sunday. Ahmed swims on Sunday. When an पुत्र ॾिसो हिन में छा प्लेस ॿुधाइणी, माना कहिड़ी शइ क माण्हू के माना कहिड़े टाइम मीन्स कहिड़ी जाइ ते थिए थो, माना कहिड़ो बि वर्क. ठीकु आहे. हिते थो चवे when an event happens or happen, माना छा किथे जो कंदो. चए थो Ahmed swims on Sunday, माना Ahmed तरे थो कॾहिं on Sunday आचर ते. उन खां पोइ डायरेक्शन. डायरेक्शन पुट, डायरेक्शन मीन्स तरफ. डायरेक्शन मीन्स तरफ. डायरेक्शन which someone or something comes or goes. Someone or something comes or goes. comes or goes. comes or goes means कहिड़ो शइ कहिड़े टाइम ते काॾां थी थिए, कहिड़े डायरेक्शन ॾांहुं थी थिए, त उते असां उहो बि छा ॾेखारींदो आहे? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रेपोजिशन ऑफ एग्जाम्पल, Uzma is throwing a ball at them. Okay, at preposition. Now beta, Uzma is throwing a ball at them means direction काॾा उन्हनि ॾांहुं उछलायो मोकिलियो. right. So preposition is a word that indicates
a position or relation of noun or pronoun. Right? Preposition is a word which used before noun or pronoun to show its relation in other words. उन लाइ पुट टे शयूं इंपॉर्टेंट हूंदियूं preposition of place, time and direction. Indication of preposition 3 preposition of place, time and direction. जीअं पुट हेॾे ॾिसो where someone माना किथे place कहिड़ी जाइ and time when कॾहिं केॾी महिल direction माना जेका शइ थी उहा कहिड़े तरफ़ ॾांहुं थी जीअं त तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾिना विया आहिनि पुट तमामु ईज़ी ऐं आसान उन खां पोइ पुट uses some on and on in with by. Okay पुट on जो यूजेज पुट on the surface. राइट पुट जॾहिं का शइ तव्हां सरफेस ते ॾिसो का शइ तव्हां सरफेस के मथाशरे ते रखियल ॾिसो था त उते असां कहिड़ी प्रिपोजिशन यूज़ कंदासीं ऑन यूज़ कंदासीं जीअं पुट डस्टर इज़ ऑन द डाइस डस्टर इज़ ऑन द डाइस जीअं माना डाइस चाहे सरफेस आहे या दिस पेन इज़ ऑन माई हैंड दिस पेन इज़ ऑन माई हैंड हीअ पेन मुंहिंजे हथ ते आहे हथु पुट छा थी वियो सरफेस थी वियो पुट त जेका शइ कंहिं शइ जे मथां ॾिसो पुट कंहिं सरफेस ते ॾिसो त उते असां छा यूज़ कंदासीं ऑन यूज़ कंदासीं ऑन यूज़ फॉर सरफेस ओके ऑन यूज़ फॉर सरफेस on my hand and input उन खां पोइ ऑन जो ॿियो यूज़ेज पुट थींदो आहे फॉर डिवाइस डिवाइस जीअं पुट ही इज़ on the phone on yeah he is solving the problem on the calculator on the computer पुट ॾिसो माना on the mobile means फ़ोन ते चढ़ी वेठो न आहे बाबा मीन्स फ़ोन ते ॻाल्हाए रहियो आहे माना मोबाइल ते लॻो पियो आहे त असां हिते बि छा यूज़ कंदासीं ऑन छा कंदा मोबाइल असांजे कन जे मीन्स आहे सरफेस ते आहे नाउ नंबर unused for body parts my mother kissed me on my forehead okay preposition my mother kissed me on my forehead my mother kissed me on my forehead right पुट या उन खां पोइ पुट in
पुट इन असां इन ऐं आन जो मक़सदु पुट इन मीन्स कंहिं शइ में, आन माना कंहिं सरफेस ते, ठीकु आहे। इन द apples in the basket, pencils is in the box, मीन्स का शइ कंहिं शइ में। ॾिसो पुट जीअं तव्हांखे मां एग्ज़ाम्पल ॾिनो, आई एम इन द क्लास, इन प्रेपोजिशन आहे पुट। मां क्लास में आहियां, क्लास जे अंदरि आहियां पुट, त असां हिते छा यूज़ कई, इन कई। एपल्स, दी एपल्स इज़ इन द बास्केट, सूफ़ टोकरीअ में आहिनि। इन जो यूज़ेज पुट, आन मीन्स कंहिं सरफेस ते, इन मीन्स कंहिं शइ जे अंदरि, इहो यूज़ेज आहे। इन खां पोइ पुट विथ मीन्स सां गॾु, एंड many more prepositions. So inshallah on and in tomorrow I will teach you other prepositions, means many more prepositions. So inshallah tomorrow we will teach usage of prepositions. So thank you so much and wish you very best of luck. Tomorrow I will meet you again other usage of prepositions.